Hello, friends. Welcome to the YouTube channel of Life and More. Today we have with us Girish Dutt Shukla, a computer engineer by education and a digital marketer by profession. Before pursuing his passion for writing, he worked as a software engineer at Mahindra Comviva in Gurgaon for around 2 years. In June 2015, he left his job and started working as a copywriter and a social media strategist in a digital marketing agency in Delhi. In his 5 years stint as a marketing professional, he has helped both established brands and startups to grow digitally with his writing skills, strategy, and marketing acumen. He regularly contributes to different websites promoting psychology and mental health. He has a proclivity for perceiving psyche and behavior and hopes to study the subject professionally in the future. Maroon in a Sky of Blue is his debut novel about which we are going to talk to him. Welcome to the YouTube channel of Life and More, Thank Girish. Hi. thank you so much, Saurabh. Thank you so much. Okay. First of all, let's start with your book. What is it about, and why is it called Maroon in a Sky of Blue? That's a very different kind of a name to a title for a book. Yeah. The book is about a introverted teenager Okay. who falls in love with this girl. Her name is Palchin, and she dies in a car crash. Like they were in a relationship for 1 year, and she dies in a car Okay. crash. So how does owner deal with that loss, and how he comes to Okay. terms with that loss is what the book is about essentially. So Okay. it deals Okay. with mental health and in particular PTSD, post traumatic stress Okay. disorder, and Mm-hmm. how he deals, like I said, deals with the loss of his girlfriend Palchin. Okay. It's called Maroon in a Sky of Blue because, like with every mental health illness, it seems that everything is fine on the surface. So it's like a sea Right. of blue. Everything seems calm. Everything seems serene. But underneath, Right. there are things that are very wrong. And uh, maroon is a color which is for known for passion, and also when the blood dries up, becomes maroonish red. If you've noticed, so that Ah, that right. Right. so it's so there's a tinge of maroon in that sky of blue. So that is why Okay. the book is called Maroon, a Sky of Blue. Okay. How come a computer engineer and a digital marketer writing about mental health? Were you passionate about mental health या कोई ऐसा कुछ किस्सा हुआ है आसपास कहीं फ्रेंड सर्कल में कहीं फैमिली में so which got you to this thing? So I've always been interested in psychology. I've liked the subject. परहैप्स मुझसे थोड़ी गलती हो गई, मैंने इंजीनियरिंग पढ़ ली, शायद मुझे साइकोलॉजी ही पढ़नी चाहिए थी। बट बट मुझे जो साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, एंड Okay. वो मैंने सोच के रखा था कि जो मेरी पहली बुक का टॉपिक होगा, वो साइकोलॉजी Okay. से किसी ना किसी वे में रिलेटेड होगा। एंड Okay. मेरे दिमाग में पूरा प्लॉट नहीं था जब मैं बुक लिखना शुरू किया। एक एक वो थी, एक ओवरऑल स्केलेटन था, एंड जैसे-जैसे मैं लिखता गया, मुझे एंडिंग समझ में आई कि अच्छा मुझे बुक ऐसे एंड करना है। एंड Okay. वो फिर मेंटल हेल्थ में जो लिखते हुए मुझे नहीं रियलाइज़ हो रहा था कि मेंटल हेल्थ पे ये बुक है Mm-hmm. या पीटीएसडी पे बुक है। ये जब बुक कंप्लीट हो गई तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये बुक मेंटल हेल्थ को भी प्रमोट करती है, एंड टच कर दिया हाँ. स्पेसिफिकली पीटीएसडी। अ, Okay. तो वो बहुत नेचुरली हुआ था, लाइक मैंने सोच के नहीं रखा था कि हाँ, मुझे मैं इस पे लिखना है। वो स्टोरी में लिखते-लिखते वो अपने आप डेवलप होता गया। Okay. So a lot of research went into talking about the subject that you're talking about in the book related to mental health. Yeah, so I've read extensively online. मैंने Okay. बहुत रिसर्च किया था बुक लिखते वक़्त, एंड Mm-hmm. माय देयर वाज़ दिस फ्रेंड ऑफ माइन, उनकी एल्डर सिस्टर Okay. साइकोलॉजिस्ट है। So I spoke to Mm-hmm. her as well at Okay. length, discussing if the thing that I'm writing makes sense, in medical terms as well. कि ऐसा Right. हो हाँ, सकता है that is क्या? important. Because it needs to be believable at the end of the day. Right. So वो सब रिसर्च किया था, and I read extensively on how different people, how they deal with loss and grief, Okay. how they deal with the death of a loved one essentially. तो वो मैंने Right. रिसर्च काफ़ी किया था लिखते वक़्त। Okay. So, how much time did it take you to prepare creating that plot?
and then getting down to write the book and then finishing it? How much time did you spend on it? So, researching was a part of the writing process only. Right. So जैसे-जैसे मैं लिख रहा था, मैं रिसर्च करता जा रहा था. I Hmm. started the book in May 2013. Uh, and मेरा फर्स्ट ड्राफ्ट दिसंबर 2016 में कंप्लीट हुआ था. तो मुझे लगभग 3.5 साल लग गए, मोर देन दैट इनफैक्ट, टू राइट द फर्स्ट ड्राफ्ट. एंड बीच में ऑब्वियसली बहुत ब्रेक भी होते थे क्योंकि आई वाज वर्किंग एट द Natural. टाइम. You. So I did not could not give full attention to the book. So but Hmm. I think after December 2016 जब मेरा फर्स्ट ड्राफ्ट कंप्लीट हो गया, I picked up pace and उसके बाद I completed the final draft in August 2017. Okay. एंड उसके बाद दो जो 2 ढाई साल लग ढाई 3 साल लगा वो पब्लिशर ढूँढने में। फिर एक थोड़ा Hmm. मेरा टाइम कुछ पर्सनल प्रॉब्लम में भी काफ़ी गया. समवन इन द फैमिली Hmm. फेल सिक, सो आई कुड नॉट Okay. गिव Okay. द ड्यू अटेंशन टू द बुक एट द टाइम. Hmm. सो बट इवेंचुअली मैंने अभी अक्टूबर में बुक फिर रिलीज़ करी. Right. Okay. So, how does it work in for first time authors, for example, people who would want to write a book or who are writing a book, and there's no godfather in the publishing industry for that matter. How does या. a first time author goes around basically looking out for a publisher? क्या प्रोसेस रहता है? So there are two ways. Okay. एक पहला जो वे है कि you can reach out to publishers. Everyone has a website, and Right. everyone has their own terms and conditions. And you submit the book and hope that they reply in the due time. सबका अलग-अलग time duration होता है. Some few publishers would respond in Hmm. 3 months, few would respond in 6 months. Uh, Okay. and they write कि if they don't respond, it means technically the book is not accepted for further process. And Okay. starting में they only ask for a few chapters and I think Hmm. a synopsis and an author bio. And the other way, which is which in which the chances of finding a decent publisher is higher, is going through a literary agent. Okay. Uh, Okay. so, so if you have a literary agent on board, it makes your life a little easier because then your literary Hmm. agent will take care of the thing of everything that goes behind the scenes. Okay. Hmm. They'll Hmm. contact the publisher on your behalf. They'll finalize the deal. They'll make sure that they give you a good deal. So all of that is Okay. done by the literary agent. But finding a Hmm. good literary agent is also a task in India, because Right. there's so many people writing a book that even Hmm. going through that first stage of finding a decent literary agent is True. is extremely hard. Yeah, that's right. So how does one find, my next question would be, how does one find a very dependable and an honest literary agent in that case? Uh, Because सब लोग बोलेंगे मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ. ट्रू, ट्रू. सो एक कुछ लोग हैं मतलब जो कि अच्छा काम कर रहे हैं काफ़ी टाइम से. उनकी बहुत ठीक है. आप रिसर्च करोगे गूगल पे, तो आपको उनके नाम मिल जाएँगे. मतलब आई थिंक 7-8 हम्म. लिटरेरी एजेंट हैं जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं. ओके. अ काफ़ी टाइम से, 6 हम्म. 5-6 ईयर्स, दे हैव बीन डूइंग गुड वर्क. ओके. सो रीचिंग आउट टू देम ओके. will हम्म. make life easier. बाकी बहुत सारे लिटरेचर एंड स्पेशली इफ अ लिटरेचर asks for money in the beginning, then you know that you are going at the wrong place, because literary agent usually takes a अच्छा. cut ओके. from your royalty. But if a literary agent is asking for money ओके. in the beginning, uh, हम्म. then it's best to just go and find some other literary agent. ओके. That's important. That's क्योंकि important. Okay. क्योंकि हाँ, लिटरेरी एजेंट यूजुअली इन इंडिया बहुत सारे हैं जो कि एडवांस माँगेंगे. दे विल आस्क फॉर आई डोंट नो मे बी ₹20,000, ₹25,000. But if a literary agent is asking for advance, then you know that literary agent won't do your work properly. That's important. Okay. So, when you write a book, in your opinion, what is that one thing which is the most important part of a book? Uh, so I think story needs to come naturally from within. If the Hmm. story is coming naturally from within, then you'll be able to do justice to the writing. अगर आप ये सोच रहे हो कि कुछ चल रहा है मार्केट में और आप उस पे लिखने की कोशिश करो
और आपका मन वो नहीं है लिखने का, तो आप मत लिखो फिर। आपको जो अंदर से लगता है, जो आपके अंदर, जो आपकी इनर वॉइस जो आपको बोल रही है लिखने के लिए, आप वो लिखो, जो आप लिखने में कंफर्टेबल हो। ये नहीं कि जो चल रहा है, क्योंकि I feel a lot of times, especially young author, like first time author, they try to mimic what a successful author is doing. तो Right, वो right. I think is not the right way to go about it. Like try to Mhm. build something that is unique to you. Right. Okay. So that is important. So That is important. how much time in a day, if it, for example you are simultaneously working as a digital marketer, so how much time in a day do you actually keep out for writing? Do you divide the time? Okay, these are the 6 hours I have to write, and these are the 6 hours I'm working. Does it work like that कि कभी भी उठाया और बैठ गए, सुबह 4 बजे उठ गए बैठ के पेन लेके, और या नहीं, कंप्यूटर लेके? जब मेरा स्केड्यूल अच्छा फॉलो मैं कर पाता हूँ, तब मैं टाइम एलोकेट करता हूँ। बट ओके। यूजुअली काफ़ी टाइम पर वो हो नहीं पाता कि व्हेन यू डिसाइड अ टाइम, क्योंकि कभी कुछ हो जाता है, कभी ऑफ़िस जाना पड़ जाता है, या कभी कुछ हो जाता है, तो फिर यू कांट डू दैट 100%, but obviously राइट, the best way is to allocate time, and time where no one will disturb you. That is राइट, also राइट, important, because दैट इज writing ऑल्सो is a इम्पोर्टेंट। lonely job. Like if people are keep disturbing you, especially in 2020, सब लोग घर पे थे, तो कभी बेल बजी, कभी कुछ हुआ, like वो ठीक बात है, डिस्टर्बेंस हाँ, होता राइट। रहता था। तो राइट। so finding that alone time is important. So you need to see हुँ, आप वो alone time कब ढूँढ सकते हो। वो आप मॉर्निंग में ढूँढ सकते हो, रात में ढूँढ सकते हो। मेरे लिए वो आफ्टरनून था, between 3 to 5, अच्छा। because उस समय कोई मेरे घर में जो होते हैं लोग, उस समय टीवी देखते हैं, सो जाते हैं। तो हुँ, हुँ, हुँ। ईदर द टू, एंड वो मुझे जो 2 ओके, घंटे का वो मिलता था टाइम, उसमें मैं राइट, राइटिंग करता था। ओके। And if you're दैट able to give दैट 2 hours is more than enough. Like you'll be able to write, you know, 700-800 words in 2 hours. ओके। हाँ, बट देन यू हैव टू डू प्री-प्लानिंग ऑफ व्हाट यू हैव टू राइट हाँ, दैट हाँ, डे, ट्रू, ट्रू, है ना? ट्रू, ट्रू। समवेयर इन द हाँ, माइंड यू मतलब हैव एक टू। स्केलेटन होना हाँ, चाहिए। स्केलेटन तो अदरवाइज़ आपको चाहिए ही होगा। हाँ, वरना फिर आप अगर बिना सोच, फिर तो बहुत टाइम लगेगा। फिर 2 घंटे हाँ, में नहीं राइट। लिख पाओगे आप। फिर हाँ, नहीं देन लिख यू पाओगे, प्रोबब्ली नीड राइट। 4 hours to write या the दैट्स same राइट, 700-800 राइट, words. राइट। So according to Girish, is writing energizing or is it exhausting? Most days it is energizing when the words Okay. flow free, but Mm-hmm. there are days when you can't even write a single sentence properly, and those days Mm-hmm. it becomes exhausting. Then you Okay. probably wouldn't write that day, and you take a break from writing. Even taking a break is important to for the creative juices to flow properly, I feel. Mm. So obviously during जब मैं ये करता हूँ, जब when I'm writing a book, I try to write every day, even on Sundays. सो दैट माय फर्स्ट, जो मेरा फर्स्ट ड्राफ्ट या जो है, वो मैं पूरा लिख लूँ विदाउट एनी ब्रेक्स, क्योंकि उस समय स्टोरी मेरे माइंड में काफ़ी अच्छे से चल रही होती है। पर अब आफ्टर द फर्स्ट ड्राफ्ट इज़ डन, देन आई ट्राई टू टेक अ ब्रेक फॉर अ मंथ, एंड देन गो बैक, सो दैट if हाँ, it's there are better. things that I missed out during the Mm. first draft, I can fix them in the second draft and the subsequent drafts. Okay. So uh, when you say that इस तरह का प्रॉब्लम होता है या इस तरह से आप डिवाइड करते हो, तो ऐसा भी होता है कि कभी-कभी राइटर्स ब्लॉक हो जाता है। जैसे बहुत बिल्कुल। बहुत फेमस एक टर्मिनोलॉजी है कि राइटर्स ब्लॉक हो गया, अब नहीं होगा मेरे से, मैं नहीं कर सकता या कर सकती। तो होता है ऐसा भी? होता है ऐसा, नहीं समझ में आता क्या लिखना है, कई बार ऐसा हुँ, होता है। एंड उस समय आई थिंक एक 2 तरीके हैं, या तो आप लिखते जाओ, जो भी लिख पा रहे हो आप, जि जितना गंदा लिख पा रहे हो आप लिखो, लेकिन जो भी कम लिखते रहो। दूसरा हुँ, तरीका ये है कि आप दूसरी किसी कोई राइटिंग पढ़ो, जिसको देख के आप इंस्पायर हो जाओ एकदम, कि अच्छा क्या लिखा है ओके। ऑथर ने या इस बंदे ने। तो एक तरीका हुँ, ये है। हुँ, प्लस कई बार इफ यू वॉच अ रियली नाइस मूवी एंड यू सी कितना दिमाग लगा है उसके, शायद डायलॉग्स में कितने अच्छे हों, हुँ, या फिर उसकी स्टोरी लाइन इतनी अच्छी हो, हुँ, तो राइट, उससे भी आप राइट। इंस्पायर हो सकते हो। या फिर आप हुँ, 1 दिन का ब्रेक भी ले सकते हो। आप 1-2 दिन का ब्रेक भी ले सकते हो। यू कैन गो आउट, बी आउट इन द ओपन, गो फॉर अ वॉक, मीट अ फ्रेंड हुँ, फॉर कॉफी, तो उससे फिर हो जाता है सॉल्व राइटर्स ब्लॉक। ओके। तो
when you talk about inspiration for writing, हुँ। does anyone actually inspired you to write? Any author who inspired you to अ write? ऐसा तो नहीं था बट आई Mm. एक्चुअली स्टार्टेड रीडिंग मोर बुक्स व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग बिकॉज़ जब मैं Okay. बिकॉज़ आई न्यू कि इफ आई रीड मोर आई विल बी एबल टू होन माय स्किल्स बेटर. Uh, Mm. that was the like there are only two ways to write better. Either you Okay. write as much as possible, or you read as much as possible. And if you do both, Right. then you obviously write a lot better. So I Right. started reading a lot more after I started working on the first drafts. So I Mhm. have a few books which I feel are really really nice. जिनकी Okay. story बहुत simple है, but the way they have been written is just Mm. incredible, and they tug a string at in your heart. Like for example, The Kite Runner by Khalid Hosseini is one book Right. Right. which I really really Mm. like. And वो बुक जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि कितनी सिंपल सी स्टोरी है, बट द वे इट्स Mm. बीन रिटन Right. वो मुझे एक कॉन्फिडेंस देती है कि लाइक यू कैन आल्सो मेक अ सिंपल स्टोरी into such an heartwarming story, Mm. and it gives you the confidence that Exactly. you can also write. Exactly. Mm. Yeah. That's true. So, inspiration majorly kite runner रही कहीं ना कहीं. कहीं न कहीं तो रही। फाइट Okay. क्लब भी रही, फाइट क्लब एक बुक है, वो भी Mm. मतलब पहले तो मुझे पता ही नहीं था जब मैंने मूवी देखी थी कॉलेज में कि बुक Mm. भी है उसके उस पर वो तो जब मैंने लिखना Mm. शुरू किया मुझे पता चला कि एक्चुअली ये पहले पता बुक लगा. थी। हाँ, हाँ, फिर मैंने बुक पढ़ी उसकी और बुक भी इज़ ऑन इज़ द इज़ इज़ एज़ गुड एज़ द मूवी। अ, सो फाइट क्लब भी आई थिंक According. Mm. कहीं न कहीं Okay. इंस्पिरेशन था। Okay. And what according to you, what does it take actually to be a good storyteller? कुछ एक qualities होनी चाहिए या कुछ language अच्छी होनी चाहिए, story line अच्छी होनी चाहिए, क्या क्या exactly चीज होनी चाहिए so that you are a very good storyteller. The person gets like glued to your book and then doesn't get away. आई थिंक योर कैरेक्टर्स नीड टू बी वेरी रिलेटेबल। Hmm. जब आपके कैरेक्टर्स रिलेटेबल होते हैं, तो Hmm. फिर स्टोरी अपने आप अच्छी हो जाती है क्योंकि फिर वो ऐसे सिनेरियोज़ में होंगे, ऐसे सर्कमस्टेंसेस में होंगे कि जो इंसान पढ़ रहा है वो किताब, वो रिलेट कर पाएगा। Hmm. एंड वो Hmm. कैरेक्टर कैसे उस सिनेरियो में उस सिनेरियो को कैसे सर्कमवेंट करता है या कैसे डील करता है उस सिनेरियो से, वो फिर कहीं न कहीं आपके जो रीडर है वो उससे एक तरीके से रिलेट कर पाएँगे और वो पसंद करेंगे फिर। Mhm. तो आई Okay. थिंक आपके So, कैरेक्टर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट more important अ, part of a book. Okay. ऑफ द बुक। What is Girish doing when he's not writing? When you're not writing, what are you doing? I'm either watching a movie Okay. or reading or spending time with friends and or family. So matlab Okay. I love meeting my friends. Family and anyway stays with me. So family Okay. से तो मतलब रोज मिलना होता ही है. But Mm-hmm. I love spending time with my friends as well. So I go to Delhi from Noida Okay. and meet them Okay. there, and तो वो मैं बहुत करता हूँ. हुँ, Okay. Tell us about your family. आप family की बात कर रहे थे. आप हुँ. कहाँ से हैं basically? Who all are in the family? Also about your So education. so my hometown is Gonda. It's a small Okay. you know town in Uttar Pradesh. Uh, Right. I was born in Bijnor. Bijnor is again a अच्छा. small town हाँ. in Uttar Pradesh, and my Mhm. father was actually a government employee. So मेरे Okay. पापा का ट्रांसफर होता रहता था Ah, right. हर 4-5 साल में. So I stayed in Kanpur, Gorakhpur, Okay. and Agra as well. So these 3 अच्छा. cities I've stayed the most. Noida, as we shifted, my family came to Noida only last year. We अच्छा. bought a house here and they came to Noida last year. And उसके पहले I stayed in Noida in 2008 and 2009. Okay. And my father, like in my family, there's my father who is now retired. That's okay. My mother, and I have 4 elder sisters. So I'm the youngest in the family. They all are married. They all have kids. Mhm. Huh. Good.
So, what are you planning next, Girish? You started writing Uh, your next book? I've finished the first draft of the second book. Okay. अब मुझे एडिट करना है और उसको अब Mhm. शुरू कर दिया मैंने एडिट करना. आई थिंक इन द Okay. नेक्स्ट 3-4 months I'd be ready with a final draft, and hopefully I'll start reaching out to publishers uh, from probably May or June next year. Mhm. So, And no literary agents for you? there is one, actually I had a literary There's one. agent on board, but Okay. उनसे कुछ मेरा काम बना नहीं for the first book. Acha. Even though Okay. even though like Mhm. he did get me a few publishing contracts, but I wasn't Okay. really happy with those contracts, to be Okay. honest. Okay. So I Okay. decided that I'll do it on my own, the first book. I would ideally want a publisher on board because that makes life Mhm. easier, because the Right. publisher takes care of the distribution, they help Mhm. in marketing, they help in different Right. ways. Mhm. Okay. They'll help you with collaborations. When Ah, you do it that's alone, important. तो आपको सब कुछ खुद करना पड़ता है. Right. So I would ideally want a publisher for my second book, and even this book, for example, like this, अभी तो 2 ही 2.5 महीने हुए हैं, so I still have enough time to find a publisher for this book as well. Like I'm Mhm. trying कि हाँ अगर इस book के लिए भी कोई publisher मिल जाता है, तो then it will make life a lot easier. Okay. For the third book, I know what I want to write. Like it will be a true fiction, a true crime fiction. Okay. आई नो, मतलब मुझे पता है कि इस इंसिडेंट के बारे में लिखना है, बट अभी वो Acha. रिसर्च अभी शुरू नहीं हुआ है मेरा, वो नेक्स्ट ईयर Mhm. शुरू होगा रिसर्च. Okay. नहीं, नेक्स्ट ईयर, कल वाला नेक्स्ट ईयर की 2022? नहीं, 2021. 2021. Okay, okay. Chal. It was nice talking to you, Girish. Thanks a ton for your time and थैंक यू सो मच letting सौरभ. us know about yourself, your book, and your life. Thanks a ton. Thank you. थैंक यू सो मच सौरभ. थैंक यू फॉर Thank हैविंग you. मी.